મજામાં મોજીલા ગુજરાતીઓ ખાવાના જોઈ અમે સપના લઝીઝ ખાવાની કરી અમે કલ્પના જી સારું ખવડાવે ઈ આપણા આવું માનનારી ગુજરાતી પ્રજાનું હું સ્વાગત કરું છું ઇન ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળ પાવર્ડ બાય શ્રીમતી જી co-sponsored by Plexus Cardiac Care in association with Atmiya Dental Clinic, product partner Umia Tea, masala partner Adani Masala, bakery partner Vinod Bakery, gifting partner Sindhu Super Clean, venue partner ITC Fortune Hotel. ई वातमां कोई शक नहीं कि गुजराती लोकोनुं खावानुं एकदम स्वादिष्ट होय छे, पण स्वाद साथे साथे सेहतनुं ध्यान राखवुं एटलुं ज जरूरी छे। आजे आपणे आवी पहोंच्या छीए राजकोटनी फेमस होटल ITC फॉर्च्यून होटल में अने त्याना सुपर टेलेंटेड शेफ आजे अपनी साथे छे, जे आजे आपणे कंईक अलग रेसिपी शीखवाडशे जेनी अंदर स्वाद तो हशे ने हशे पण ते आपणी हेल्थ माटे पण सौथी सारी हशे। वेलकम टू द शो शेफ अमित। थैंक यू अश्विन। शेफ जेवी रीते मैं तमने कीधुं कि आज आपणे एक एवी रेसिपी शीखवाना छीए जे स्वाद साथे साथे सेहतनुं पण ध्यान राखे छे, तो चालो जाणीए शेफ पासेथी कि डायट में शुं होवुं सौथी जरूरी छे। शेफ, हमारे दर्शक मित्रों के डाइट में, उनके खुराक में क्या चीज़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डाइट और फूड का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? डाइट एंड फूड का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आज की डेट में अगर आज के जनरेशन का बात करें, जिस तरीके से हम फूड खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपना जो मेन कोर्स हो गया वो प्लाटर में सर्व होना शुरू हो गया, मतलब उसके साथ ही आपको सारा फूड आ जाता है। लेकिन आज से पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो लोग एक लेमन का स्लाइस फूड के साथ जरूर ऐड करते थे, ऑनियन ऐड करते थे। उसके पीछे रीज़न था वाई दे आर एडिंग दैट। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, विनेगर वाला फूड खाते, चाइनीज़ फूड खाते तो लेमन उसमें होता ही नहीं है, बट इंडियन फूड में बहुत टाइम से हम लोग लेमन यूज़ करते ही हैं। तो आज की आपके फूड में, डाइट में लेमन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी मेन कोर्स अगर खा रहे हैं तो उसके साथ में आपको लेमन को लेना ही लेना है। लेमन का भी एक मेजरमेंट होता है कि कितना आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, वो आप एक दिन में 30 ml तक कंज्यूम कर सकते हैं। 30 ml आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और लेमन के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं रिलेटेड टू योर स्किन, रिलेटेड टू योर डाइट, वो मतलब हर जगह आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। ओके, લીંબુ બહુ નોર્મલ આપણું શાકભાજી છે અને એના બહુ બધા ફાયદા છે, બધા વિટામિન લીંબુની અંદર હોય છે અને આપણો જે રસથાળ છે એની અંદર લીંબુની એક પ્રોપર જગ્યા છે જેનાથી આપણું डाइजेशन एकदम બરાબર થાય। ચાલો હવે જાણીએ શેફ પાસેથી કે આજે કઈ અવનવી હેલ્ધી રેસિપી આપણી પાસે છે એમની પાસે। शेफ, आज हमारे दर्शक मित्रों के लिए कौन सी हेल्दी रेसिपी है आपके लिए? आज हम एक हेल्दी रेसिपी लेके आए हैं, उसका नाम हमने दिया है फिट एंड स्लिम सैलेड। ओह वाह! और ये फॉर्च्यून होटल में सबसे ज़्यादा कस्टमर इसको लाइक करते हैं। हर एक गेस्ट जो यहाँ पे फूड लेता है वो सैलेड ज़रूर ऑर्डर करता है, उसको बहुत पसंद है ये सैलेड, क्योंकि इसमें हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है जो आपको, जिसमें से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्थी हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इस सैलेड के लिए, जैसे कई होटल्स में क्या विनेगर यूज़ करते हैं, अलग अलग वैरायटी होता है, वी यूज़ लेमन जूस फॉर दिस। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, एक तो स्प्राउट है, स्प्राउट के साथ में आप इसको मॉर्निंग में रोज ऐड कर सकते हैं अपने डाइट चार्ट में। तो ये सैलेड हम लोग इतने ईजी मेथड में आपको बना के सिखाएंगे कि आपका मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो आप इस सैलेड से कर सकते हैं। तो आज अपनी पासे छे फिट अने स्लिम सैलेड। आ सलाड फॉर्च्यून होटलना कस्टमर्सने तो बહુ જ ભાવે છે અને મને ખાતરી છે કે બધા ગુજરાતીઓને પણ આ એટલું જ ગમશે અને આ સલાડ તમે તમારી દરરોજની લાઈફસ્ટાઈલમાં અગર એડ કરશો તો તમે જરૂરથી વધારે હેલ્ધી બનશો। शेफ, हमें इस फिट एंड स्लिम सैलेड बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सबसे पहले हमने स्प्राउट, ओके, लेमन, हमने सैलेड ऑयल लिया है, आप ऑलिव ऑयल लेना चाहते हैं ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑरिगानो लिया है, चिली फ्लेक्स है, कैप्सिकम है, टमाटो है, अनियन है, हमने ये तिल को रोस्टेड किया है, काली मिर्च है, ग्रीन कोरिएंडर है एंड लेमन ग्रास। परफेक्ट। આપણું સૌથી મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એ ફણગાવેલા મગ છે અને બધાને ખબર હશે કે ફણગાવેલા મગ આપણી હેલ્થ માટે કેટલા સારા છે। शेफ, लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। यस, इसके लिए कोई भी सैलेड जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सबसे पहले इसका ड्रेसिंग प्रिपेयर करेंगे। तो ड्रेसिंग के लिए हम सबसे पहले लेंगे लेमन जूस।
એક બાઉલની અંદર આપણે સૌથી પહેલા લીંબુનો રસ લેશું. Then we add salad oil. લીંબુના રસની અંદર આપણે સેલેડ ઓઇલ નાખશું. સેલેડ ઓઇલની બદલે આપણે ઓલિવ ઓઇલ પણ વાપરી શકશું. अनियन, जो लोग अनियन नहीं खाते हैं वो अनियन अवॉइड कर सकते हैं इसमें. બારીક સમારેલી ડુંગળી આપણે આની અંદર નાખી છે. જે લોકો ડુંગળી ના ખાતા હોય તે ડુંગળી વગર પણ આ સલાડ બનાવી શકે છે. અને એની અંદર આપણે બારીક સમારેલું ટમેટું નાખશું. And capsicum chopped. એની અંદર આપણે કેપ્સિકમ, ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ નાખશું. Then oregano. સ્વાદ અનુસાર ઓરેગાનો. Black pepper crushed. તીખાસ માટે મરીનો ભૂકો નાખશું આપણે. And coriander. અને લાસ્ટમાં કોથમીર. इसको मिक्स करना है. જેટલા પણ મસાલા નાખ્યા છે બધાને આપણે એકદમ સરખી રીતે મિક્સ કરી લેશું. और लेमन का जो यूज़ हम इसमें करते हैं, लेमन जनरली क्या है, अपनी बॉडी को भी काफ़ी हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई करता है. अगर हमारे बॉडी में हम लोग इतना डाइट जो अपना रेगुलर होता है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंजीरियस टू हेल्थ होते हैं. तो ये क्या करता है, लेमन कहीं ना कहीं उसको भी टॉक्सिफाई करता है, फिल्टर करता है, अपने ब्लड को क्लीन करता है. जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इसके बहुत फ़ायदे हैं. विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है, विटामिन सी मिलता है. इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है. तो मतलब एक लेमन का जो एक कॉम्बिनेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फूड. मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ सैलेड में ही आप लेमन यूज़ करो. विद योर एवरी फूड अपनी डाइट में छोटा सा लेमन का पीस जरूर ऐड करें. तो आप कितना भी हैवी फूड भी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट करने में आसानी रहेगी. ગુજરાતીઓનો થાળ હંમેશા આખો ભરેલો હોય છે. ફરસાણ, અથાણું, બધી વસ્તુ હોય છે. આટલું હેવી ફૂડ ખાયા બાદ અગર આપણે આપણા ડાયટની અંદર, આપણા થાળની અંદર લીંબુ રાખીએ તો તે આપણને પાચન શક્તિને વધારે સારી કરશે અને આપણને વધારે હેલ્ધી બનાવશે. જ્યાં લગી આપણું લેમન સલાડ તૈયાર થાય છે ત્યાં લગી આપણે એક લઈ નાનકડો વિરામ. વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં. આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ ફોર્ચ્યુન હોટેલમાં અને અહીંના શેફ આજે આપણને એક નવી વાનગી શીખવાડે છે જે બધા ગુજરાતીઓના ડાયટમાં દરરોજ માટે ઇસ્તેમાલ થઈ શકે છે. એ વાનગી બહુ હેલ્ધી છે અને એનું નામ જ એવું છે ફિટ એન્ડ સ્લિમ સલાડ, જે આપણને ફિટ, સ્લિમ અને હેલ્ધી રાખવામાં મદદરૂપ થશે. शेफ जो हमें बेसिक प्रिपरेशन करनी थी वो हो गई है. अब आगे क्या करना है? ये जब फिनिशिंग में आएगा, जब अपना रेडी हो गया है, देन फिनिशिंग में अगर हम चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से तो चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पेपर ऑलरेडी यूज़ किया है. लेकिन चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. તમને વધારે તીખું જોતું હોય તો આપણે ઓલરેડી મરીનો ભૂકો નાખ્યો જ છે, પણ તમે વધારે તીખાસ માટે चिली फ्लेक्स આમાં નાખી શકશો. अब हम इस डिश को ब्रेकफास्ट की तरह बना रहे हैं कि आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं. तो इसके लिए हमने क्या ब्रेड का भी इसके साथ में कॉम्बिनेशन किया है विद द ब्राउन ब्रेड.
कि आप अपने जो ब्रेकफास्ट में है आपका ब्रेड भी हो जाएगा एंड सैलेड भी हो जाएगा। शेफ अलग अलग टाइप की ब्रेड्स होती है, उसमें से हमने ब्राउन ब्रेड ही क्यों ली है? क्योंकि ब्राउन ब्रेड हेल्दी होता है, इसमें आटा ऐड होता है, अपना जो फ्लावर है। बाकी जो रेगुलर ब्रेड्स होती है वो मोस्ट ऑफ द ब्रेड्स जो होती है वो मैदे की बनती है, रीफ्लावर की बनती है। सो हम लोग हेल्दी सैलेड बना रहे हैं तो दैट्स व्हाई वी ऐड हेल्दी ब्रेड। ઓકે, અત્યારે આપણે સલાડની અંદર બ્રાઉન બ્રેડ યુઝ કરશું કારણ કે બ્રાઉન બ્રેડ ઘઉંના લોટની બની હોય છે, બાકી આપણે બીજી બ્રેડ લઈ છે એ મેંદાની બની હોય છે જે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા શરીરને નુકસાન કરે છે, એટલે સલાડમાં પણ આપણે બ્રાઉન બ્રેડ યુઝ કરશું અને આપણે ઘરમાં રેગ્યુલર ખાવા માટે પણ બ્રાउन ब्रेड જ પ્રિફર કરવી જોઈએ। शेफ अब आगे क्या? अब इसके लिए हम थोड़ा सा बटर डालेंगे पैन में। પેન ને ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે થોડું અમથું બટર નાખશું। शेफ बटर के बदले हम घी या घी वी कैन यूज घी। अब ब्रेड को थोड़ा टेस्टी बनाना है तो अगर आपको स्पाइसी करना है तो हल्का सा चिली फ्लेक्स ऐड करिए। બટર સ્લાઇટ ઓગળે એટલે એની અંદર થોડુંક ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો નાખશું, જેથી બ્રેડનો જે માઇલ્ડ ટેસ્ટ હોય એની અંદર એક અલગ ટેસ્ટ આવી શકે। एंड जो ब्रेड का स्लाइस है उसको उसमें सौते करना है। પેનની ઉપર પછી આપણે બ્રેડની સ્લાઇસ મૂકી દેશું। शेफ कितनी देर लगेगी ब्रेड को? जैसे हम लोग रेगुलर टोस्ट बनाते हैं वैसा ही सेम है प्रोसेस, 2 मिनट्स में हो जाएगा। आप घर के तवे में करेंगे तो ये 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, बट आपका ब्रेड थोड़ा क्रिस्प होना चाहिए क्योंकि आपका जो सैलेड है वो थोड़ा सा अपना मतलब ड्राई है, तो उसके साथ में थोड़ा क्रिस्प ब्रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये क्रिस्प भी होना चाहिए क्योंकि ब्रेड को हम डायरेक्टली हीट करके निकाल देंगे तो ब्रेड विल बी सॉगी। तो क्या है, सॉगी नहीं होना चाहिए, ब्रेड थोड़ा क्रिस्प होना चाहिए। तो मिनिमम 2 मिनट्स का टाइम तो उसमें लगेगा। બ્રેડને શેકાતા 2-2.5 મિનિટ જેવો સમય લાગશે, જેનાથી બ્રેડ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ શકે અને આપણા સલાડ સાથે આપણે એની મજા લઈ શકીએ। જે આપણે ઓરેગાનો અને પેપ્રિકા નાખ્યા છે બ્રેડ શેકવાના ટાઈમે, એટલે જે બ્રેડનો જે માઇલ્ડ ટેસ્ટ છે એની અંદર એક નવી ફ્લેવર એડ કરશે। દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે બટર એકદમ બ્રેડની અંદર મિક્સ થઈ ગયું છે અને એની સાથે સાથે ઓરેગાનો અને પેપ્રિકા પણ બ્રેડ ઉપર એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। આપણી બ્રાઉન બ્રેડ શેકાઈ રહી છે ત્યાં લગી આપણે જાણીએ શેફ પાસેથી કે જે મગ આપણે ફણગાવી છે એની અલગ અલગ મેથડ હોય છે। હર ઘરમાં અલગ અલગ રીતે મગ ફણગે છે, તો આપણે જાણીએ શેફ પાસેથી કે સાચી આઈડિયલ મેથડ, સાચી આઈડિયલ રીત કઈ હોય છે। शेफ, आप हमारे दर्शक मित्रों को बताएंगे कि जो स्प्राउट मग करते हैं उसके लिए जो कौन सी आइडियल मेथड होती है? आइडियल मेथड जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं उसमें अपने को सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हम दाल लेते हैं, जो मूंग हमने जैसे लिया है इसमें, तो उसको पहले अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको पानी के साथ बहुत देर तक सोख के रखना है। देन उसके बाद कितनी देर तक हमें पानी के साथ? मिनिमम 3 आवर्स तो आपको उसको रखना है। उसके बाद आपको वेट, कोई भी साफ नीट एंड क्लीन जो वेट कपड़ा हो, जो गीला कपड़ा हो, और जो उसमें ऐड करना है उसको, बट उसमें स्प्राउट के अंदर हल्का सा पानी होना चाहिए और जिस कपड़े के अंदर आप उसको ऐड कर रहे हैं उसमें वो भी हल्का सा वाटर उसमें होना चाहिए। मॉइस्चर यस, मॉइस्चर उसमें रहेगा तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, स्प्राउट बनना शुरू हो जाएगा। बट उसके लिए भी अगेन, अगर आप उसको किसी कोल्ड रूम के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर रख लोगे तो वो उतना अच्छा नहीं निकलेगा स्प्राउट। तो उसके लिए एक टेम्परेचर चाहिए होगा 25 to 30 के बीच में। हाँ, रूम टेम्परेचर रहेगा जो आज की डेट में रेगुलर है। तो आज की डेट में आप घर के किसी भी कोने में रख दोगे तो स्प्राउट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्दियों में इसका बहुत इशू आता है, सर्दियों में जल्दी से नहीं बनता है, तो उसके लिए आपको घर का कोई कोना ढूंढना पड़ता है जो ज्यादा गर्म हाँ, हो। इन आर होटल्स हम क्या करते हैं, इसको तंदूर के थोड़ा नजदीक रखते हैं क्योंकि तंदूर के अंदर हीट होता है, तो वो प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर हम उसको वेट क्लॉथ में रखें तो कितनी देर में? फिर 12 आवर्स आपको, हम लोग इसको 12 आवर्स रखते हैं मिनिमम, क्योंकि हम लोग उसको बहुत सारे सैलेड्स में यूज़ करते हैं, बहुत सारे फूड में यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको 12 आवर्स मिनिमम रखते ही हैं। 12 आवर्स ही आइडियल है अच्छा स्प्राउट आने के लिए। મગને સ્પ્રાઉટ કરવાની રીત તો તમે જાણી જ લીધી હશે કે આપણે મગને સૌથી પહેલાં સરખી રીતે ધોઈ લેવાના કે એમાં કોઈ પણ ડોટ ના રહી જાય અને એને પછી પાણીની અંદર ડૂબડૂબા થાય ત્યાં લગી રાખવાના। ઓછામાં ઓછી 3 કલાક લગી તમારી મગને એમ જ રાખવા પડે।
એની પછી કોઈ પણ સાફ કપડું આપણે ઘરે લેવાનું, જેને તમારે ભીનું કરી નાખવાનું, અને એની અંદર આપણે આ મગ રાખી અને 12-1 કલાક લગી એને સ્પ્રાઉટ થવાનો, ફણગાવવાનો સમય આપવો પડે. સ્પ્રાઉટ થવા માટે એવું જરૂરી નથી કે તમારે એને ફ્રીજમાં રાખવું પડે કે વધારે ગરમ ટેમ્પરેચર પર રાખવું પડે. તમારા રેગ્યુલર ઘરના રૂમ ટેમ્પરેચર પર આ एकदम સરખી રીતે સ્પ્રાउट થઈ શકે છે. शेफ अब आगे क्या करना है? हमें ब्रेड हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया एंड इसके बाद हम लोग ये पूरा सैलेड मिक्स करेंगे इसमें. एकदम क्रिस्पी ब्राउन कलर આવ્યો છે બ્રેડનો. જ્યાં લગી આપણી બ્રેડ તૈયાર થાય છે ત્યાં લગી આપણે લઈ લઈએ એક નાનકડો વિરામ. मेरे रिया और रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं। गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती हैं और मम्मी पापा मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं। पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो हैं अदानी मसाले। बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले, ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले। खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं। बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए। अदानी बेहतरीन मसाले। सिंधु सुपर क्लीन जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, लिक्विड ब्लू। वी मेक यू बिलीव। सुबह होते ही अर्जेंट के चक्कर में अभी जिंदगी कट जाती है। कन्फ्यूजन के दौर में जिंदगी लटक जाती है। शुक्रिया उम्मीद जाएगा, लाइफ बैलेंस हो जाती है। शुक्रिया उम्मीद जाएगा। વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇન ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળ. આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ ફોર્ચ્યુન હોટેલમાં અને અહીંના શેફ અમિત આજે આપણને એક અવનવી હેલ્ધી વાનગી શીખવાડે છે જેનું નામ જ એકદમ હેલ્ધી છે, ફિટ એન્ડ સ્લિમ સેલેડ, જે આપણને ફિટ, સ્લિમ અને હેલ્ધી રાખવામાં મદદરૂપ થશે. આપણું એનું બેઝિક બેટર તૈયાર છે, આપણી બ્રેડ એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. હવે ચાલો જાણીએ શેફ પાસેથી કે હવે આ સલાડમાં આગળ શું કરવાનું છે. शेफ अब इस सलाद के लिए आगे हमें क्या करना है? अब हमें स्प्राउट भी हमारा रेडी है, ड्रेसिंग भी रेडी है और ब्रेड भी जो हमने की है वो भी एकदम रेडी है. अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, ओके देन इसको प्लेटिंग करेंगे. डन. જે આપણા ફણગાવેલા મગ છે એ આપણે જે આપણું આખું ડ્રેસિંગ તૈયાર કર્યું છે એની અંદર નાખવાના રહેશે. એકદમ સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું કે બધા ટેસ્ટ એકબીજા સાથે પ્રોપરલી મિક્સ થઈ જાય. इसके लिए फिर हम ये लेमन ग्रास को कटिंग करेंगे फॉर द गार्निश. ગાર્નિશિંગ માટે આપણે લેમન ગ્રાસને કટ કરીશું. દર્શક મિત્રો, હું જણાવી દઉં કે લેમન ગ્રાસ એક ઔષધિની બરાબર જ છે, જે આપણી હેલ્થ માટે બહુ જ સારું છે અને લેમન ગ્રાસ જેટલું ફ્રેશ હોય એટલું વધારે સારું રહેશે. शेफ, ये लेमन ग्रास मार्केट में इजीली अवेलेबल हुआ है? ये मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसको उतना ही आसान आप अपने घर में छोटे गमले में भी इसको उगा सकते हैं. आपको इसका रूट अगर एक बार मिल जाता है तो आप उसके रूट को अगर गमले में डायरेक्टली डिप कर देते हैं तो ये ऑल वेदर प्लांट है, तो किसी भी वेदर में आपको दिक्कत नहीं होगी. हम अपने होटल में इसको उगाते हैं तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है. आपको रेगुलर वाटर थोड़ा थोड़ा देना है और ज़्यादा ध्यान रखने वाला प्लांट नहीं है. ये अपने आप धीरे धीरे ऑल वेदर में ग्रोथ करता रहेगा. લેમન ગ્રાસ તમે તમારા ઘર આંગણે ઉગાડી શકો છો અને આના જે ફાયદા છે એનો દરરોજ ઉપયોગ કરી શકો છો. शेफ, अब आगे क्या करना है? आगे हम इसको ऐड करेंगे प्लेटर में. જે આપણે આખું મિક્સચર કર્યું છે વેજીટેબલ્સ સાથે અને ફણગાવેલા મગ સાથે, એને આપણે આપણી પ્લેટમાં કાઢશું.
लेमन ग्रास हमने ये काफ़ी ગાર્નિશિંગ માટે આપણે લેમન ગ્રાસ યુઝ કરશું. લેમન ગ્રાસની એક પોતાની એક અલગ જ સુગંધ હોય છે. જે શેફ ચોપ કરતા હતા ત્યારે એની અરોમા આવતી હતી. और इसके साथ में आपको जो हमने ऐड किया है हेल्दी ब्रेड, બ્રાઉન બ્રેડ આની સાથે આપણે એડ કરશું. ये लेमन ग्रास को हम लोग रेगुलर टी में भी यूज़ कर सकते हैं. टी में भी ये काफ़ी हेल्दी होता है. ચાના શોખીન જ હોય છે બધા ગુજરાતીઓ. આપણે આપણી ચાને સ્વાદિષ્ટ તો બનાવી જ છીએ, પણ એની સાથે આપણું સેહતનું ધ્યાન રાખવા માટે આપણી ચામાં આપણે લેમન ગ્રાસ પણ એડ કરી શકશું. શેફ हमारी आज की प्लेट रेडी है. यस, તો તૈયાર છે આપણું ફિટ એન્ડ સ્લિમ સલાડ. સાંભળવામાં જ એટલું હેલ્ધી છે અને જોવામાં પણ એટલું જ હેલ્ધી અને ડિલિશિયસ પણ છે. હવે હું મારા દર્શક મિત્રોને ટેસ્ટ કરીને જણાવીશ કે આ જેટલું દેખાવમાં ડિલિશિયસ છે એટલું જ સાચે છે કે નહીં. જે રીતે તમને ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જણાવ્યું હતું કે આ એવી ડિશ છે જે તમે તમારા બ્રેકફાસ્ટમાં ઇન્ક્લુડ કરી શકો છો અને નાસ્તો તો ગુજરાતીઓને એકદમ સ્વાદિષ્ટ જ જોઈએ છે, તો આ ડિશ એકદમ સ્વાદિષ્ટ છે અને તમારી માટે એકદમ હેલ્ધી પણ. તો આ ડિશ મારા દર્શક મિત્રો ઘરે બનાવશે એની ખાતરી છે મને, તો નોંધી લો આ ડિશ માટેની સામગ્રી અને રીત. ફિટ એન્ડ સ્લિમ સલાડ બનાવવા માટેની સામગ્રી: લીંબુનો રસ 30 ml, સલાડ ઓઇલ 50 ml, ડુંગળી 30 ગ્રામ, ટમેટા 30 ગ્રામ, કેપ્સિકમ 20 ગ્રામ, ઓરેગાનો જરૂર મુજબ, મરી પાવડર 5 ગ્રામ, કોથમીર 10 ગ્રામ, બ્રાઉન બ્રેડ 4 નંગ, બટર 1 ચમચી, ચીલી ફ્લેક્સ જરૂર મુજબ, ફણગાવેલા મગ 200 ગ્રામ. ફિટ એન્ડ સ્લિમ સલાડ બનાવવા માટેની રીત: બાઉલમાં લીંબુનો રસ, સલાડ ઓઇલ, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ટમેટા, કેપ્સિકમ, ઓરેગાનો, મરી પાવડર, કોથમીર નાખી હલાવી લેવું. બ્રાઉન બ્રેડ લઈ તેની કોર કાપી લેવી. પેનમાં બટર, ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગાનો નાખી બ્રેડને શેકી લેવી. આપણા સલાડ મિક્સચરમાં ફણગાવેલા મગ ઉમેરવા. આપણા સલાડને બાઉલમાં કાઢી ક્રિસ્પી બ્રેડ સાથે સર્વ કરી લેમન ગ્રાસથી ગાર્નિશ કરવું. તો તૈયાર છે આપણું ફિટ એન્ડ સ્લિમ સલાડ. સામગ્રી અને રીત નોંધી લીધા બાદ આ ડિશ તમારે ઘરે બનાવી હોય તો કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું, ચાલો જાણીએ આપણે શેફ પાસેથી. शेफ, अगर हमारे दर्शक मित्रों को ये डिश अपने घर पर बनानी है तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी टिप्स है जो आप उनके साथ बताना चाहेंगे? मैं इसमें ये शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ इस रेसिपी में कि जैसे हम लोगों ने जो प्रोसेस फॉलो किया, एक तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है. जितनी देर हम लोग ये सबसे पहले जो ड्रेसिंग बनाते हैं, ये ड्रेसिंग को थोड़ी देर तक अपने ऐसे ही रेडी करके रखना है. उसके बाद ब्रेड सेकना है. समटाइम्स क्या होता है, घर में भी हम लोग सैलेड बनाते हैं, बहुत ही इंस्टेंट सैलेड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अनियन में अलग टेस्ट आता है, पूरा मिक्स नहीं हो पाता है. तो इसमें क्या है, हमने ये जो लेमन के साथ छोड़ा इतनी देर में जूस, तो ये पूरा मिक्स हो गया अच्छे से, मतलब ड्रेसिंग एकदम रेडी हो गया. अनियन में भी गया, टमाटो में भी गया, कैप्सिकम में भी गया, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन रेडी है. जितनी देर आप ब्रेड करेंगे, सेकेंगे, इतनी देर में पूरा फ्लेवर उसके अंदर ऐड हो गया है. देन आप सेम प्रोसेस से उसको आगे बिगिन कर सकते हैं. राइट. તમારે ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે તમે જે તમારું ડ્રેસિંગ તૈયાર કરો એને પ્રોપર ટાઈમ આપવો પડે, એને સમય આપવો પડે કે બધા જે ટેસ્ટ છે એ એકબીજાની અંદર સરખી રીતે ઘૂળી મળી શકે. આવી અવનવી અને હેલ્ધી ડિશ શીખવાડવા માટે થેન્ક યુ સો મચ શેફ. દર્શક મિત્રો, તમે જાણો જ છો કે અમે તમારી માટે લાવ્યા છીએ એક ક્વિઝ કોન્ટેસ્ટ, જેના તમે સાચા જવાબ દઈને બની શકો છો લકી વિજેતા. તો નોંધી લો આજના પ્રશ્નો. પ્રશ્ન નંબર 1: મગને ફણગવા માટે કેટલો સમય લાગે છે? પ્રશ્ન નંબર 2: એક દિવસની અંદર લીંબુની કેટલી માત્રા આપણા શરીર માટે બરાબર છે? પ્રશ્ન નંબર 3: ફિટ એન્ડ સ્લિમ સલાડની અંદર આપણે કઈ બ્રેડનો ઉપયોગ કર્યો છે? આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ તમે અબ તક મીડિયાના
ફેસબુક અને યુટ્યુબ પેજના કમેન્ટ સેક્શનમાં પણ દઈ શકો છો અને તમારા જવાબ તમે અમારી લગી વોટ્સએપથી પણ પહોંચાડી શકો છો. તો નોંધી લો અમારો વોટ્સએપ નંબર 94266 72303 9426672303. તો આપો હવે અમને રજા. કાલે પાછા આ જ સમયે એક બીજી અવનવી વાનગી લઈને અમે તમને મળશું ઇન ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળ, પાવર્ડ બાય શ્રીમતીજી, કો સ્પોન્સર્ડ બાય પ્લેક્સસ કાર્ડિયક કેર, in association with Atmiya Dental Clinic, product partner Umia Tea, masala partner Adani Masala, bakery partner Vinod Bakery, gifting partner Sindhu Super Clean, venue partner ITC Fortune Newton. धन्यवाद.